there's a certain cinematic approach to American jails and European jails, which we don't have. Our jails, which we realized when we went to Tihar, is it's courtyards. Yeah. It's open courtyards and kind of barracks, and so from a perspective के यार वो corridors और light और कुछ भी नहीं। ग्रेम सैड पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करनी थी, ये बिल्कुल क्लियर था शुरू से। By certain people that the theme in my film is always trapped characters trying to find their salvation. Okay. This is what I've been told, and that's an attraction that I have towards that. And so after my first one, I had to actually sit back and think, really? And then I had to really go back and kind of analyze it. And maybe it's true, maybe it's not. ये हम लोग बहुत अवेयर थे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप यू आर मेकिंग द डेफिनेटिव प्रिजन शो फॉर इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुछ बनाया और फिर 2-3 साल बाद किसी ने बनाया जिसने हमसे ज़्यादा मेहनत भी कर ली, हमसे ज़्यादा रिसर्च भी कर लिया, हमसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, हमसे ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है। Hello team Black Warrant, welcome to Cinema Express. I am Karthik. I want to start off with this, like usually जब भी पुलिस स्टेशन या जेल या प्रिजन के बारे में बात होती है तो सबका परसेप्शन फिल्मों से ही आता है। मैक्सिमम लोगों ने फिल्मों में ही देखा है, अगर किसी किस्मत ख़राब है तो एक्चुअली में देखा है, बट मैक्सिमम लोगों का वैसे ही रहता है। तो व्हेन यू लाइक मे बी फॉर रिसर्च फॉर ब्लैक वारंट और जनरली मे बी यू हैड टू गो फाइल अ कंप्लेंट और मे बी जस्ट हैड टू सी अ प्रिजन, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है द फर्स्ट टाइम? वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम हाउ इट इज़ शोन इन सिनेमा एंड व्हाट इज़ दैट एक्सपीरियंस लाइक? कैन स्टार्ट विद एनीबॉडी। You mean how different our portrayal is from other portrayals of the jail? No, I mean how Okay. When you go to the jail. Yeah, when you go to the jail, how Okay. different it is Oh from my God. सिनेमा में जैसे दिखाया जाता है। बहुत बार तो लगता है कि बिल्कुल सही सिनेमा जो दिखाया था वही है, क्योंकि हर किरदार कलरफुल है। ओके। हाँ, हर किरदार आपको सरप्राइज करेगा। आपको यू कांट इमेजिन कि अरे ये इतना स्टाइलिश बंदा, ये जो दुनिया भर के फिल्मों के डायलॉग कोट कर रहा है, ये एक्चुअली तिहाड़ में बैठा है। तो कई चीज़ें तो, बल्कि हमें तो मोर दिख गया था। The idea of the more came from there. मोर हमने तिहाड़ में देखा, हम वहाँ थे, अचानक एक मोर आया, 30 सेकंड तक बैठा और उड़ के चला गया। तो फिर हमने सोचा इसको तो कहानी में डालना पड़ेगा। तो बहुत चीज़ें तो वहाँ ऐसी होती हैं कि हम कह दें फिल्मों में डाल दें तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो झूठ बोल रहे हो तो। बट बहुत चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जैसे वहाँ पर पता नहीं घुसते, क्योंकि फिल्म देखते वक्त ना आपको उतने अपने एनर्जी आपको उतना फील नहीं होता। जब आप जेल के अंदर जाते हो आपको फील होता है, आपके बॉडी पर आपको उस एनर्जी का असर फील होता दिखता है। चिड़िया की आवाज़ नहीं आती वहाँ पर। फॉर सम रीज़न दे नो दैट दिस इज नॉट द राइट प्लेस। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, थोड़ी देर बाद आप अगर रियलाइज़ करोगे कि सर चिड़िया की आवाज़ नहीं आ रही, अरे हाँ आवाज़ नहीं आ रही। तो इस तरह की कुछ बहुत अनर्विंग चीज़ें हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो सिस्टम्स है ना, कैसे होता है वहाँ पर जैसे जो कॉफ़ी पिलाई जाती है, जेल के ही अंदर के गौशाला से गाय का दूध निकाल कर हमें जो तिहाड़ में कॉफ़ी पिलाई गई, दिन में 3 बार मोटे दूध की कॉफ़ी। तो ये सब कुछ चीज़ें, बल्कि आप वहाँ पर छोड़ दें हमें तो हम 2-3 महीना वहीं ऑब्जर्व, भगवान ना करे। Vikram, same experience for you, like when you guys went. I think you guys went to Tihar for research, right? Same experience. I think we see cinematically, एक तो इंडिया में I think जेल की तो इतनी मतलब fully based on jail. I don't think there's been that many things made. Yeah. So your reference points are always something internationally, whether it's Shawshank Redemption being, of course, your gold standard, or it's Mindhunter. There's a certain cinematic approach to American jails and European jails, which we don't have. Our jails, which we realized when we went to Tihar, is it's courtyards. Yeah. It's open courtyards and kind of barracks, and so from a perspective के यार वो corridors और light वो सब नहीं है. तो number one, that breaks the thing. It's काफी, when we went to Tihar, we're like यार ये तो काफी, it's peaceful, मतलब बगीचे हैं, it's open, it's very organized, but like Sitanshu was saying, you meet these very interesting personalities within jail. Everybody's a character. Everybody is somebody who's interesting. Whether it's the prisoners themselves or it's the jailers themselves, they're all very interesting personalities. So a lot of myths are broken, but yes, you also do see the fact that it is not a place that you want to go to, that you would have to go to. So you do see a system in place over there. So that's which is the interesting personality. Like both of you said that interesting personalities. Is there any interesting personality you met? I remember from us, we met multiple guys. There's a couple of, there's a DSP we met who's a huge film buff.
who was in charge of the kitchen at Tihar. So Okay. he was in charge of the kitchen and canteen. So like Sudhanshu saying, we actually went there and had biscuits made fresh. मतलब कि we walked into the factory, अभी fresh बने हैं, वो tray में निकाल के हम दिया, गरम बिस्किट हम लोग खा रहे हैं तिहार से, you know. So और वो कुरोसावा को कोट कर रहे थे. हाँ. He's like world cinema fan. Yeah. World cinema fan. We're sitting there having that milky coffee and he's discussing world cinema with us and stuff. So he's a personality, he's a character. We met another guy who again was very good looking, ekdam perfectly fit uniform, walking there in charge of everybody, very calm, very composed. We met another guy, remember पहली बार जो गए थे हम लोग जो 2020 में, when we didn't go inside the jail, but we took that drive around. That guy who took us around. Again, fascinating personality, just the way, and you sometimes wonder why would people choose to take this job? Yeah. You know what I mean? You understand कि चलो यार, there is, you know, there's एक ज़रूरत होती है and there's a requirement, but I'm saying that why would anybody choose to do this? And I guess, I mean, we all know the answer to that, but so you have these guys, and then also within the prisoners, I think there was when we entered that ward, there was they stopped the Nambardar system, but there was that one guy who was a supervisor kind of stuff. मतलब he was the friendliest person I've ever seen in my life. मतलब इतना friendly था वो सबके साथ. He was a Nambardar or like Kind of Nambardar. I think he was in charge of the ward. So I think very friendly person who's happy to please everybody else. And so again, you're questioning हमारा motive क्या है life में and so on and so. This like when you're saying Nambardar and in the first episode एक सांप के ऊपर पूरा episode है कि सांप किसने मारा है. These little details, like the whole show is made of little details, and then how the story is being made. What was the process? Like, were you guys looking at a jail? Like, what was something I want to ask? What was something you guys didn't want to do? Because prison dramas इतने ज़्यादा बन चुके हैं, mostly jailbreak dramas होते हैं, जब भी prison की बात होती है. तो क्या perception था कि किस type से we want to make a show in India that's based in a jail, and also India में ऐसा show बना नहीं. So you don't, like you were saying, you don't have any precedent. So what was the point of view on that? ये जो बुक है ऐसी भी बुक लिखी नहीं गई है प्रिजन पे, तो ये हम लोग बहुत अवेयर थे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप यू आर मेकिंग द डेफिनेटिव प्रिजन शो फॉर इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं था. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुछ बनाया और फिर 2-3 साल बाद किसी ने बनाया जिसने हमसे ज़्यादा मेहनत भी कर ली, हमसे ज़्यादा रिसर्च भी कर लिया, हमसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, हमसे ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है. ये नहीं हो सकता था. तो सब हमको करना था, कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी, वो करना ही पड़ेगा. सो वो आपने बड़ा अच्छा पूछा कि क्या नहीं करना था, क्योंकि आई थिंक वो सवाल एक तो ज़्यादा लोग पूछते भी नहीं हैं कि क्या नहीं करना था. हमें डिप्रेसिंग, ग्रिम, सैड पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करनी थी. ये बिल्कुल क्लियर था शुरू से. हमें कैरेक्टर जर्नीज बनानी थी, और इसलिए जो वॉयरिज्म का जो गेज होता है ना कि देखो ये जेल के लोग कैसे हैं, उसके बजाय हमारा एम्पैथी का गेज था कि हम इसके लिए रूट कर रहे हैं. वो बिल्कुल शुरू से क्लियर था. वो बेसिकली विक्रम सर के उनके फिल्मोग्राफी से भी है, उनके लाइफ की आइडियोलॉजी से भी है कि हमारा जो गेज होगा वो कैसा होगा. वो बिल्कुल फर्स्ट डे से वो बिल्कुल क्लियर था. और एक जो चीज़ थी कि हम लॉन्ग आर्क में, हमारे यहाँ ज़्यादातर सीरीज़ लॉन्ग आर्क में बनती हैं. एपिसोड्स अपने आप में सिटकॉम्स के अलावा बहुत कम होते हैं जो अपने आप में एपिसोड्स कंप्लीट होते हैं. विक्रम सर ने हर एपिसोड का 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है. हाँ. विक्रम सर ने शुरू में बोला था कि हम लोग बहुत डायरेक्टर्स को शामिल करेंगे, उनसे अलग अलग एपिसोड डायरेक्ट करवाएंगे. और मैं इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे लगा ये कितना अमेजिंग है कि कितने अपकमिंग फिल्म मेकर्स को हम मौका दे सकें. कितने एज इन 20 को तो नहीं दे पाएंगे, बट इन 3 लोगों को जो मौका मिल पाया, ये तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक से विक्रम सर के दिमाग में ये बात थी. I want to ask you guys, Rohin, Arkesh and Ambika, I want to know कि like you know every director has its own vision. सबका अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग तरीका होता है किसी भी चीज़ को शूट करने का, कुछ चीज़ दिखाने का. But when like you have Vikram and Satyanshu on the their creative vision उनका है, how does this work? Like कि every episode should actually go in seam with the entire thing. तो like what is his like what Satyanshu and Vikram must have given you कि किस टाइप से करना है, किस टाइप से शो डायरेक्ट करना है, किस टाइप के एपिसोड्स डायरेक्ट करने हैं, वो क्या था? और क्या आप अपना जो करना चाहते हैं वो भी कर पाए, या was it like in process with that? So I think one of the early discussions that we guys had कि even though we are doing one respective episode,
but it has to look seamless. जैसे मेरी पर्सनली मेरी सबसे बड़ी तारीफ होगी अगर किसी को पता ही ना चले कि रोहिन, अंबिका, अर्केश ने ये एपिसोड डायरेक्ट किया या स्टाइल थोड़ा अलग लग रहा है. इट शुड सीम लाइक विक्रम मोटवानी ने किया है. एंड वही से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि फाइनल एपिसोड में मुझे पर्सनली, ऑडियंस किसी को ना देखे, बट मुझे कहीं ना कहीं दिखना चाहिए अच्छा दैट इज़ मी. सो दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी पर्सनल टू मी. एंड मेरे को पता है मेरे एपिसोड में मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे बाहर आ रहा हूँ. सेम फॉर यू अर्केश? तो फ्रीडम तो आई मीन ऑब्वियसली विक्रम एंड सुधांशु, बट जब आप तो हमें काफ़ी फ्रीडम था. देयर वाज नेवर अ टाइम वेयर विक्रम इज सिटिंग डाउन विद अस हमारे शॉर्ट लिस्ट पे बैठ के ये नहीं कहने कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो. ये कभी नहीं था. तो हम जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कि तुम अपने अप्रोच से इसको डायरेक्ट करो. अच्छी चीज़ क्या है कि हम जब शुरू के पहले 2 दिन विक्रम ने डायरेक्ट किया था तो हम देख पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या अप्रोच ले रहे हैं. तो उससे हम अपने आप को इन्फॉर्म किया. उसके अलावा चूँकि विक्रम हर दिन सेट पे थे तो यू कुड ऑलवेज टर्न एंड आस्क कि ये मैं करना चाह रहा हूँ. इफ़ यू वर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट आपको पता होता है कि ये शो में बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो आप एक बार हम चेक कर लेते थे कि क्या ये करूँ कि नहीं करूँ. एंड जनरल विक्रम का आंसर का होता था कि अगर तुम्हें मन हो तो करो, बिकॉज यू हैव टू देन लिव एंड डाई बाय जो आपने किया है उससे. एंड देन अनदर थिंग इज़ कि हमारे जो सिनेमाटोग्राफर थे सौम्य शाही, वो ही द सेम सिनेमाटोग्राफर एंड ऑल थिंग, एंड हिज टीम इज़ द सेम टीम. तो उसके कारण एक विजुअल कंसिस्टेंसी आती है. फिर हमारे एडिटर जो तान्या छाबरिया जिन्होंने ये 7 एपिसोड एडिट किए हैं, वो सेम एडिटर हैं अगर, तो फिर उससे भी एक रिदम और एक पेसिंग का और सीजनल आर्क का जो रिदम और पेसिंग होता है वो इससे कंसिस्टेंट हो जाता है. तो ये सब मिला जुला कर जो है आपको एक जो कंसिस्टेंसी दिख रही है वो दिखती है. Ambika, same for you? Same for me. And I think Vikram started his work a little before we went on shoot. Like he gave us episodes that he knew each one would be suited to. So that he kept in his mind. And when we were on shoot and we were directing and we realized that, oh, this is something he had thought of before we were on shoot. But not once has he had a conversation with us where he said कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. शुरू में तो हम ढूंढ रहे थे शुरू में कुछ बता दो कि क्या नहीं करना है. तो him finding the visual grammar of the show was very organic. It included everybody. And फिर जहाँ पे भी हमें डाउट रहता था वो हमेशा सेट पे रहते थे. And yeah, like Arkesh said, Shomo, Tanya, everyone was common to the show. So it was very easy for us to kind of give a seamless show like that. I actually think their personalities come out. I mean, like, hey, एक seamlessness, but in terms of I actually realized what a showrunner does this time. After being a showrunner for so long. After being a showrunner, I finally, because no, also I think Sacred Games, especially season 1, because I was also directing, you know, and at that point in time, it was such in a way that I needed to have a second director on that. We tried on Sacred Games. The initial approach was that, okay, let's do this episodic, you know, a director directing 2 episodes. And it became कि भाई it's an impossible. My first edit said, sir, मैं कैसे करूँगा? आपके 2 स्टार हैं, 2 अलग-अलग कहानियाँ हैं. How is somebody going to go from prep and shoot in one world to prep and shoot in the other world when you're shooting parallelly? ऐसा नहीं है कि आप ऐसा शूट करोगे. तो चांस ही नहीं है. ऐसा चलो ठीक है, because the dates had worked out. So I told Anurag, I said, यार तू direct कर ले वो. I'm not going to come to you. I said, I'll do this and Aarti was here to figure it out. Here I was a little bit more conscious of it. No, it needs to be, let's get into that system. Let's actually have directors do where they own it beginning, middle and ending. Okay. To sort of do it. And I realized that my job and Satyanshu's job was just making sure that the character is consistent throughout. At any point in time, I think the only question that become, no, Sunil should not do this or Sunil should not do that or let these characters be this way. I think it was just about us trying to keep the box of where the character arcs of all the main characters go. But I love the fact that each of them, I think each of them have brought a personality into that episode and that episode in itself has a beginning, middle and ending, and it sort of like works for it. So it's like that lovely mixture of both things where yes, it's consistent across the board because you're taking a character story across it, but each episode has its own individuality, its own tone, and even for me, episode 1 and 2 are very different episodes. Okay. Episode 3 is a very different episode tonally. So is 4, so is 5, so is 6. You know? So that way, I think that was a conscious decision. Vikram, I want to ask you, how does it work? Because like I spoke to the actors also, and they were saying that you let them be, like you let them do what they're doing, and like how the directors also saying that he never came and told whatever. But as the person who is like the apex of this hierarchy, and you are seeing everything, how do you let it go? Like how you don't feel like I should do it like this, or maybe like it should be in sync with this.
Like, how do you like let like your actors be, or like a lot of directors might not. A lot of directors might say कि यार ये ऐसे होना चाहिए, फिर इसको ऐसे करना चाहिए. They are more micromanaging that way. How do you let that be? In a sense, always been a place where let the actors. It's from rather than me tell you what to do, you show me what you're going to do, and I'll give you a yes and no, or I'll say कि हाँ ये ठीक है लेकिन थोड़ा ऐसे कर दो, ये वो ठीक है थोड़ा ऐसे कम कर दो या ज़्यादा कर दो. It's been that way with my HODs as well, whether it's costume or whether it's whatever. They're like, what do you want? I said, no, you tell me what you want. And, you know, so I like that approach. It makes it collaborative. It makes it far more collaborative. Everybody feels that they're a part of something. And he's never letting it go. Okay. No. He's not letting it go. He's waiting for you to express yourself. Okay. And then he will step in if he needs to. So he's always available and aware. Has this been since Udaan, या और क्योंकि Udaan was your first film, तो first film में थोड़ा सा control ज़्यादा I feel like कि एक director रहता है, like, or has it been like that only since then? No, I think the only difference between the first time I got a DA, like an assistant, was on Bhavesh Joshi. उसके पहले ऐसे भी like DA की ज़रूरत क्या है? मैं सब कुछ तो कोई short bit तो मैं कर ही रहा हूँ, so on and so forth. Then when I first had a DA for the first time, Lohita was my DO and Bhavesh. I'm like, wow, ये तो अच्छा है. मतलब you can actually sort of like delegate things and do things, and since then it's been a no, but generally it's always been. I've never got into, especially when it comes to with other HODs, with my production designer or my costume designer or my, we'll find a solution together. But I'm never going to say I specifically want that color on that wall and that on this and so on and so forth. I just feel that there's enough to do anyway as a director. Why do you have to sort of like trouble yourself with all that work? Yeah. Vikram, you and Satyanshu worked together in Udaan, and after that I think you read Chintu Ka Birthday also as a script, and I think you guys not collaborated, but maybe like he was the spoke biggest about champion of the script. Okay. Period. So like I'm thinking ki why, like, you called him like after a lot of time had passed since then, and he called you. Yeah. What made you think of him? Like, what made you think he can be a great person to do Black Warrant? तो मैं भी पूछ रहा हूँ आज तक. मुझे तो मिला नहीं जवाब. अब दे ही दीजिए जवाब, बता दीजिए क्या है. No, I think Satyanshu's growth, not only as a screenwriter but also a teacher. I think that the more that he was teaching, I was finding that the more his own analytical approach and the way that he was looking at scripts was getting refined and getting changed and getting better. So it was that thing, and I've been meaning to collaborate with him for a while, but we never found the right kind of thing to do. Beach mein, I remember I pitched him some story and he'd pitched me back some story, and मतलब किया था हम लोगों ने. But this one just felt like the right thing, which I felt that instinctively that Satyanshu will be the right person to dig deep into this. He likes research. He likes taking deep dives. Spreadsheets. Spreadsheets. I know कि यार ये पढ़ेगा, ये किताब नहीं है, 5 और किताब पढ़ेगा, काम करेगा. He'll bring more to the table than me telling him what to do. So it's not like a clerical job. And screenwriting is never a clerical job. And it should not be a clerical job. But sometimes directors tend to make it कि ये मेरा vision है और मैं बकता रहूँगा और तुम what I'm going to say, you guys, you put it into a screenplay format, which is, I don't think that's right at all. So that's why I think Satyanshu, to sort of like, because I know the approach that he would take a very clinical approach, but also a very कहीं ना कहीं, I mean, the joke became afterwards ना कि हमारे crew के सुनील गुप्ता तो यही है. You know what I mean? At any point in time, DA would ask me, but sir, उसका क्या करना है? सत्यान्शु से पूछो. Everything became Satyanshu se pucho. On this set, it became ask him, he'll know the answer to. He said, I'm not Sunil Gupta. I don't know what their cap should be like or badge like and stuff like that. No? But this became that thing. And you have that instinct about the fact that he'll be the right thing. So basically that. You guys, when it comes to like, you're adapting this book, okay, and you're taking like one maybe like chapters or like episodes of this book. What was your process like? You have been given like this work, and I think you guys must have read the book. And what is that process like? How do you go about, like this episode has been given to me, and now I'm going to direct it in this way. Like, you can tell about each of your episodes. Like, what is that process like? So I directed the 3rd episode, which deals with the jail. So initially, this thought was going in my head: should I go to JNU or should I talk to people who were part of the escape? But that could be figured.
But then I thought, rather than doing that, let's talk to Satyanshu, let's talk to Vikram sir, and figure the language. And those are the primary impulses. And yeah, it was very, very, very organic. And maybe as a filmmaker, I was figuring my process and how to deal with actors. क्योंकि बेली में पहली बार इतना बड़ा set, इतना बड़ा stage, and working with such good actors. So it was a constant process of reevaluating your choices, figuring, I won't call it a style, but your process of how to go about it on a daily basis. क्योंकि daily हम 7 to 8 pages per day भी shoot कर रहे थे, which was also a major challenge. So yeah, I guess the short answer would be कि we had such a amazing team. For you, Arkesh? तो writing भी बता, because he has been involved in the writing stage. I Like want from to the know, beginning? From almost the beginning, almost. So I want to know what you feel about that. So Satyanshu obviously came 2020, middle 2020 he came on board. Somewhere in the first half of 2021, इसने मुझे, हम दोनों इसको 30 साल से जानते हैं, Yeah. इसने मुझे खींच लिया प्रोजेक्ट पे. तो मतलब obviously you know Satyanshu he's an educator, he's a great teacher. तो उसके साथ काम करते हुए one of the best things is कि आप साथ में काम भी कर रहे हैं और अपना क्राफ्ट भी होन कर रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं, क्योंकि obviously he's a treasure trove of what screenwriting is. और वो जो कमिटमेंट टू द क्राफ्ट होता है, तो जब आप लिख रहे हैं तो भी आप ये देख रहे हैं कि मैं सीजनल आर्क, द कमिटमेंट इज़ ऑलवेज कि मेरा स्क्रिप्ट की तरफ, पूरे 7 एपिसोड के स्क्रिप्ट की तरफ, इन कैरेक्टर्स की तरफ एक कमिटमेंट होना चाहिए. जो आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो आप यही सोच रहे हैं कि एपिसोड 5 में क्या हुआ है, जो कि किसी और ने, सत्यांशु ने डायरेक्ट किया, और एपिसोड 7 विक्रम डायरेक्ट करेंगे. तो इन आपने 5 के एंड में कैरेक्टर्स को कहाँ पाया है, 7 के शुरू में आपको कहाँ डिलीवर करना है, और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि ये स्मूथ रहे, मैं इसके बीच में नहीं आऊँ कहीं. और दूसरा कि टोनली 5 हर एपिसोड का अपना एक अलग टोन, एक अलग मूड है. तो आप देख रहे हैं कि 5 में ये टोन और ये मूड पे ख़त्म हो रही है बात, 7 में हम यहाँ जाएंगे. तो क्या ज़रूरी है करना कि ऑडियंस को देखने में एकदम सीमलेस लगे, उनको नहीं लगे कि ये कोई बीच में घुस के किसी और ने एक नई फिल्म बना दी है अपनी. तो ये चीज़ें हम दिमाग में रख रहे. बाकी जो रोहित ने बोला, देखिए अर्केश ने जो बात नहीं बोली, वैसे मैं होप कर रहा था, पॉलिटिकल जो एक आइडियोलॉजी, एक विजन है ना, वर्ल्ड व्यू है, वो मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसका बहुत स्ट्रांग है. आपने पोस्ट में लिखा भी था. हाँ. उसके बाद इसका फ्लेयर है लैंग्वेज को लेकर जो बहुत स्मार्ट है. कई डायलॉग जो जिसका क्रेडिट मेरे एपिसोड्स में एक्चुअली इसने लिखा है, मैंने चुरा लिया है. तो मुझे एक्चुअली मेरा प्रोसेस और मेरे स्प्रेडशीट्स वो ज़रूर इसको फॉलो करना पड़ा था, मगर जो एक राइटिंग का फ्लेयर होता है, जो एक अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड होता है, उसमें मैं इसको फॉलो कर रहा था. और आई वॉज ग्लैड कि मैं इधर उधर भटकूंगा तो मुझे बोल देगा कि देख उधर नहीं जा सकते हैं. सो बहुत बड़ा इसका दैट वे आई ऑलवेज फेल्ट सेफ दैट ड्रामेटिकली विक्रम सर इज देयर, ऑल्सो पॉलिटिकली, बट डे टू डे डिसीजंस में Arkesh was always there to remind me what we should do and what we should not. For you, Ambika? मेरे को तो एक एपिसोड डायरेक्ट करना था, बट व्हेन द प्री प्रोडक्शन फेज वाज सो लॉन्ग एंड वी वर पार्ट्स ऑफ द रीराइटिंग ऑफ द ड्राफ्ट्स, कि हमको लगा कि हमने 7 एपिसोड को हम रग रग से वाकिफ़ हैं हम 7 एपिसोड के. तो जब 4th एपिसोड डायरेक्ट करने की बात आई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अलग से क्या करना है. और आई थिंक विक्रम ने मुझे सिलेक्ट भी किया 4th एपिसोड के लिए क्योंकि उसमें एक फीमेल गेज है. तो 1-2 बार जब मैं बहुत परेशान होकर अपने दोस्तों से रोती थी, सिर्फ विक्रम से नहीं, कि मुझसे नहीं होगा कल का शूट, मुझसे नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस सीन, दे वुड बी लाइक तुमको लिया इसीलिए गया है. तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द शूट. Vikram, I want to ask this, like I've been meaning to ask this to you for like so long. Whenever like you see an Anurag's film, जब भी अनुराग कश्यप की फिल्म आती है या इम्तियाज़ की फिल्म आती है या किसी डायरेक्टर की, आपको पता होता है क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है. अनुराग कश्यप समथिंग ग्रिटी, समथिंग डार्क माइट बी देयर, एंड इम्तियाज़ इज लाइक एनी कमिंग ऑफ एज स्टोरी, एनी रोमांस टेल. When it comes to you, it's like something new is coming all the time. Like you started off with a coming of age story of Udaan, then there is Jubilee, then there is Control. सबका अलग-अलग genre है. Is there something like, is there ऐसी कोई theme नहीं है जिसके बारे में आप फिर से जाना चाहते हैं उसके पास? Like is there something like that? Like is there no theme you want to explore maybe more than once? I've been told by certain people that the theme in my film is always trapped characters trying to find their salvation. This is what I've been told, and that's an attraction that I have towards that. And so, after my first one, I had to actually sit back and think, really, and then I had to really go back and kind of analyze it. And maybe it's true, maybe it's not.
I just honestly for me it's just the excitement of the story. I think the excitement of the chase. जो एक होता है ना कि you have an idea or a spark or a book or something, and the idea of taking that and making this out of it. With your collaborators, with people. I think the idea that this is going to be a journey that might take a year, 2 years, 3 years, 4 years. But you're getting on this journey, you're creating a new family, you're living with that family for a while and making something, and then making another family, another one. I think that for me is that's my favorite part of filmmaking. I think the problem solving, the creating part of it is my favorite part of filmmaking. So you're saying the shoot is your favorite part? Just the whole process, the whole creation process, the whole idea of chasing the excitement of taking a spark of an idea and turning it into something which is complete, and the freshness which I like to approach every subject or everything. That excitement is what kind of keeps me going. So if I have to do the same thing or the same thematic thing again, for me that the excitement is not as much as when I have to do something brand new and fresh and ये कभी किया नहीं है तो यार इसका कुछ let's try something. And so I think it's partly my own journey that I'm trying to discover, and so that's why I enjoy it. Are you saying like external, like you're mentioning like books, like external things से inspiration ज़्यादा आता है rather than like a story coming from within? Is it something like that? No, probably more from within. Okay. It comes more from within. I think there's an idea a day, yaar, in terms of of what can actually sort of happen. Especially when one is on break from work, then you actually get 1,000 ideas. That's the curse of having a writer's mind or filmmaker's mind. It comes from multiple places. Okay. Does it happen like when you're working on project or writing something and you're like, this is also an idea which we can work on? All the time. I think on that note, I think best of luck for Black Warrant. Thank you so much Thank you. for speaking. Thank you.